Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us and don't forget to subscribe to our YouTube channel Legal Bee. If you're preparing for any competitive examinations after your law, then you're at the right place. At iExamB, we provide you coaching for various examinations. Our online courses are available for SEBI Grade A Legal Officer Examination, RBI Grade B Legal Officer Examination, IBPS SO Law Officer, IBPS RRB Examination. All these are available, and various other courses. Mega B Legal course, which is having a combination of all these courses in one package. So ये सारे कोर्स डिटेल्स आप iExamB के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. आप हमारे कोर्सेज की डेमो भी एक्टिवेट करके देख सकते हैं. डू विजिट आवर वेबसाइट. कोई भी क्वेरीज हो, रीच आउट टू अस बाय राइटिंग अस एन ईमेल ऑन hello@iexamb.com और कॉल अस ऑन दिस नंबर 9205524028. एंड कोई भी क्वेरीज हो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी रीच आउट कर सकते हैं. We will definitely try to help you as soon as possible. Download our iExamB app and prepare 50% faster for various jobs. Today I'm going to discuss with you all about the recent issue which is ongoing about the NEET UG examination 2024. Whether a retest has been ordered by the Supreme Court. Exactly what orders have been passed by the Honorable Supreme Court in this particular issue is what we are going to investigate in our video today. So stay tuned to Legal Bee, watch this video till the end. अगर आप लॉ स्टूडेंट है, लॉयर है, एकेडमिशियन है लॉ फील्ड में, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको सारे करंट लीगल अफेयर्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं. NEET exam was conducted on May 5 across 4,755 centers and around 24 lakh candidates had appeared for it. The result came on June 4th. Issue that was arisen relating to it was that 67 students have scored out of marks. That is 720 out of 720. NEET बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का एग्जामिनेशन है. इसको क्रैक करना आसान नहीं है. एंड इसमें फुल स्कोर लाना, वो भी 67 स्टूडेंट्स का, ये बात थोड़ी सी सबको खटक रही थी. एंड दैट हैज़ गिवन अ राइज टू सस्पिशन अमंगस्ट एवरीवन. And out of these people, 6 were from the same center in फरीदाबाद, हरियाणा. So क्या ये mere coincidence है या इसके पीछे कोई conspiracy है, इसके पीछे कोई leak of paper है? These things are currently going on. NTA has granted also grace marks to 1,563 candidates for loss of time. ये भी एक नया इशू उसमें आया था. NTA जो कि नेशनल टेस्ट जो एजेंसी है जो नीट एग्जाम कंडक्ट करता है, ये एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स दिए थे 1563 कैंडिडेट्स को नीट के लिए जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ होगा. वो भी एक इशू निकल के आया है. एंड नेक्स्ट इशू जो बहुत ही मेजर इशू है, दैट देयर इज अ सजेस्टिव पेपर लीक इन बिहार, पटना. The SIT probe that is investigating this particular case in Bihar has seized some post-dated checks and certificates of students from an organized gang. So they are currently investigating, they are collecting circumstantial evidences, they are corroborating evidences, and they are trying to find out that whether there is an actual leak or not. As of now, they say that there is a suggestive leak. All these things are going on, and now the students, those who have given NEET are in a dilemma. क्या हमें वापस से NEET देना होगा? और जो लोग इनफैक्ट पूरे कंट्री में यही बात चल रही है कि क्या हम लोग डॉक्टर्स बनाने के लिए भी पेपर लीक बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है. दिस इज गिविंग यू एंट्रेंस इन द मेडिकल कॉलेजेस, MBBS एंड अदर कोर्सेज एज वेल. So this is a very sensitive issue and we cannot make doctors by this process if there is any kind of loophole that has to be addressed. So the matter has finally reached the Supreme Court. Various petitions are pending in the High Courts and those are being transferred. NTA has requested to transfer them, club them into one petition before the Honorable Supreme Court. What the Supreme Court has ordered as of now is that, first of all, there was a demand of ex parte order of CBI probe investigation. ये CBI probe investigation की डिमांड की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको ex parte रिजेक्ट कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that
we will hear the reply from the respondents on this particular issue, and they have issued the notice to NTA to file its reply within 2 weeks. NTA itself has requested on the issue of the grace marks. At least that issue is being closed now. The Honorable Supreme Court has allowed that request of NTA as well, that the grace marks of 1563 candidates will be withdrawn from them, and students will be given the option to either reappear the NEET examination. Only those 1563 students, not the others as of now. यानी कि ये ऑर्डर हुई है कि जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे, वो स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल मार्क्स एक्सेप्ट करे विदाउट द ग्रेस मार्किंग, या फिर वो री एग्जामिनेशन दे, जो कि अभी कंडक्ट होने वाला है 23 जून को. So this request of NTA was allowed by the Apex Court, and this issue has been closed as of now. The court has also refused to stay the NEET counseling processes that are going on in the colleges across, because बाकी सारे centers में तो examination बहुत smoothly और अच्छे से conduct हुआ है. जो disputed things है उसको ज़रूर address किया जाएगा, लेकिन NEET counseling process पे stay Supreme Court ने अभी नहीं लगाया है. The next date is July 8th. July 8th तक देखते हैं क्या होता है. What reply is being filed by NTA, and what are the results of the investigation of the SIT probe in Bihar, and then we will actually see that what are the final orders passed by the Supreme Court. As of now, these are the updates, and the compensatory of grace marks issue has been closed now. Public notice shortly दी जाएगी. NTA ने ये ट्वीट में भी बताया हुआ है कि इनका रीटेस्ट कंडक्ट होगा 23 जून को, सिर्फ इन स्टूडेंट्स का. उनको ऑफिशियली कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू दैट दे विल बी एलिजिबल टू गिव अ रीटेस्ट, या तो फिर वो अपने ओरिजिनल मार्क्स एक्सेप्ट कर लें विदाउट गिविंग अ रीटेस्ट, इट इज़ देयर चॉइस नाउ, और उनके ग्रेस मार्क्स कट कर दिए जाएंगे. सो दिस इज हाउ दिस इशू हैज़ बीन रिजॉल्व एज ऑफ नाउ. बाकी के इश्यूज अभी भी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन जारी है. लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट एंड व्हाट जस्टिस इज बीइंग डन. Let us wait for the orders and the further hearings of the Honorable Supreme Court. Stay tuned to Legal B for all such kind of videos, updates and content. Prepare 50% faster for examinations with iExamB, and download our iExamB app from the Google Play Store. हमारा full course access available है iExamB के app पे, with all the features available, live classes, daily quizzes, daily current affairs, even in the offline mode. So do check it out. Don't forget to subscribe to Legal B. Thank you everybody. Have a nice day.